एट लेसन है और आज टुडे लेसन अबाउट स्टेट फतहा। स्टेट फतहा लाइक अलिफ, जैसे लेटर के साथ अलिफ ज्वाइन होता है हम उसको स्ट्रेच करते हैं, लिटिल बिट स्ट्रेच करते हैं। तो इसी तरह जो स्टेट फतहा होता है या खड़ी जबर होती है उसको भी हम इसी तरह स्ट्रेच करते हैं। सो लेसन को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट लेटर बा, स्टेट फतहा बा। Just 1 or 2 seconds, hold your sound like ba, state fatha, ba. Next, ya, state fatha, ya, ya, state fatha, ya. Next, raw, state fatha, raw. Next, meme, state fatha, ma. Lam, state fatha, la. Next, wow, state fatha, wa. नेक्स्ट नून, स्टेट फतहा ना। यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेट फतहा जो है वो मेंशन किया हुआ है, इन्होंने स्टेट कसरा मेंशन नहीं है इस पेज में। एंड रिवर्स दम्मा जो होता है, उल्टा पेश जिसको हम कहते हैं, वो भी इधर मेंशन नहीं है। बट उन्होंने आपको एक चीज मेंशन कर दी कि जिस तरह स्टेट फतहा आप पढ़ते हैं बा, स्टेट फतहा बा, इसी तरह अब बा स्टेट कसरा बी, इसका साउंड बी का साउंड आ जाएगा। ओके, एंड देन बा रिवर्स दम्मा बू, लाइक। सो यहाँ पर जस्ट आपको स्टेट फतहा मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आपको स्टेट कसरा और वो मेंशन नहीं किया हुआ, बट वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट हमजा, स्टेट फतहा आ। नेक्स्ट हा, स्टेट फतहा हा। नेक्स्ट आइन, स्टेट फतहा आ। नेक्स्ट था, स्टेट फतहा था। नेक्स्ट वाइन, स्टेट फतहा वो। नेक्स्ट खौ, स्टेट फतहा खौ। नेक्स्ट ता, स्टेट फतहा ता। नेक्स्ट सा, स्टेट फतहा सा। नेक्स्ट जीम, स्टेट फतहा जा। वेरी इजी, जिस तरह आप लेटर्स पढ़ रहे हैं साउंड वैसे ही लेटर्स का आता है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी इजी थिंग। नेक्स्ट दाल, स्टेट फतहा दा। नेक्स्ट जाल, स्टेट फतहा जा। नेक्स्ट जा, स्टेट फतहा जा। नेक्स्ट सीन, स्टेट फतहा सा। शीन, स्टेट फतहा शा। नेक्स्ट सौद, स्टेट फतहा सौ। दौद, स्टेट फतहा दौ। तो, स्टेट फतहा तो। जौ, स्टेट फतहा जौ। फा, स्टेट फतहा फा। कौफ, स्टेट फतहा कौ। कैफ, स्टेट फतहा का। ओके, ये लास्ट लाइन है, ये डिफरेंट है। अब इसके अंदर इन्होंने आपको टोटली डिफरेंट एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब वो टोटली डिफरेंट चीज क्या है? फर्स्ट लेटर इज हमजा। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, हमजा एंड अलिफ के अंदर डिफरेंस होता है। अलिफ जो होता है वो ऑलवेज ब्लैंक होता है, और हमजा जो होता है उसके ऊपर जबर जेर पेश या फतहा दमा कसरा में से कोई ना कोई साइन होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अलिफ एंड हमजा। अलिफ ऑलवेज ब्लैंक एंड हमजा ऑलवेज हैज अ जबर जेर पेश एंड फतहा दमा और कसरा। सो फर्स्ट लेटर इज हमजा। हमजा हैज kasra and then small ya. So we join hamza to ya. Hamza, kasra, ya, e. That is ya madda. And other very important thing, which is alif madda
Waw madda and ya madda. Alif madda, waw madda and ya madda. And what is alif madda? Alif madda is alif sakin and previous letter has a fatha sign. Alif sakin, alif means alif blank, no fatha dhamma kasra on alif and previous letter has a fatha sign. So that is alif madda. That is the definition of alif madda. Like alif sakin and previous letter has a fatha sign. Alif, waw and ya madda, that is a very, very important thing in Quran. Because in every word, mostly every word, has a alif, waw and ya madda. So that is a very important thing. Uh, okay. So what is alif madda? Alif madda is alif sakin and previous letter has a zabar. And previous letter कोई भी हो सकता है. Ba, ta, ta, jim, ha, ha. Every letter. But most important thing is fatha sign. So alif sakin and previous letter has a fatha. Okay. And what is waw madda? बेसिकली ये लेसन अभी नेक्स्ट लेसन यही है अलिफ और या मद्दा बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया ये लास्ट लाइन को so that's why I tell you about alif, waw and ya madda. So alif madda is alif sakin and previous letter has a fatha. And what is waw madda? Waw madda is waw sakin and previous letter has a dhamma sign. Like पेश जिसको हम पेश भी कहते हैं ठीक है dhamma sign. So what is waw madda? What is waw madda? Definition. Waw madda is waw sakin and previous letter has a dhamma sign. And what is ya madda? What is ya madda? Ya madda is ya sakin and previous letter has a kasra sign. So this is three very important thing which I tell you. Alif madda, waw madda and ya madda. Alif madda is alif sakin and previous letter has a fatha sign. Waw madda, waw sakin and previous letter has a dhamma sign. And ya madda, ya sakin and previous letter has a kasra sign. So that is very important things. These three alif, waw and ya madda. So that is ya madda. I told you ya sakin and previous letter has a kasra. So first letter is hamza and hamza has a kasra sign and then next letter is ya. So that is ya madda. So alif, waw and ya madda we stretch little bit, not so much but little bit. So alif, waw and ya madda hold sound like a 2 second, little bit 2 second, not 4, 5 or 6 seconds, but 2 second. Like hamza, kasra, ya, e, like a 2 or 3 second. Okay. Okay. Next letter. Ha, kasra, ya, he. That is also ya madda. I told you about ya madda definition. Ya sakin and previous letter has a kasra sign. So that is also ya madda. Next. Wow, Dhamma, wow. Wow is very tiny, very small letter. Wow, Dhamma, wow. Woo, wow, Dhamma, wow. Woo. That is wow madda. Wow sakin and previous letter has a Dhamma sign. So that is wow madda. That's why we stress a little bit. Next, ha, Dhamma, wow. Woo, ha, Dhamma, wow. Woo. ये भी वाव मद्दा है जैसे हमने बताया था ना वाव साकिन हो उससे पीछे वाले लेटर के ऊपर जो है वो पेश होती है ये भी वाव मद्दा है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया आगे हमजा पेश वाव ऊ हमजा पेश वाव ऊ ये भी वाव मद्दा है इसकी वजह से हमने इसको स्ट्रेच किया सो लास्ट लाइन थोड़ी डिफरेंट थी इन प्रीवियस लाइंस बट वेरी इंपॉर्टेंट so that's why I tell you about alif, waw and ya madda. So first जो अभी today is our 8th lesson. So I tell you about 4 signs. I tell you about 4 signs. First sign is fatha dhamma kasra. Fatha dhamma kasra. That is the first sign. Okay. And second sign double fatha, double kasra, double dhamma. Like दो जबर दो जेर दो पेश. ये सेकंड साइन हो गया था जो मैंने आपको बताया था ओके थर्ड साइन इज जो हमने डिस्कस किया था मद्दा साइन
जिसको हम 5 to 6 सेकेंड होल्ड करते हैं साउंड को, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। फोर्थ साइन आज हमने जो डिस्कस किया वो स्टेट फतहा, खड़ी जबर, ये वाला साइन जो है वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद फिफ्थ साइन जो मैंने आपको बताया वो है फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा। It is very important, which is very very important, because when you start Quran, in mostly every letter, every word, in every word mostly you see a alif madda or waw madda or ya madda. Okay, so that is very important. That's why I tell you these three signs. Okay, so that is today our lesson, which I tell you about everything. And अलिफ वाव या मद्दा का भी मैंने आपको बता दिया, अलिफ मद्दा, अलिफ साकिन एंड प्रीवियस लेटर जो